गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ। मैं आज जा रहा हूँ मेरे रूममेट्स के साथ बाहर कहीं। तो भी इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज़ मैं बिज़ी था कोविड एंड ऑल के ड्यूटीज़ वगैरह में। तो आज बहुत दिनों बाद एक टाइम मिला, सोचा आज यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ। वैसे मैं गया बहुत जगह लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। मैं इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा पोस्ट वगैरह नहीं कर रहा था, इंस्टाग्राम पे भी इतना एक्टिव नहीं था। तो चलो आज एक न्यू वीडियो बनाता हूँ। तो चलो लेट्स गो, अभी बाहर जाते हैं। आज एक बाइक राइड है, बाइक ट्रिप है, थोड़ा ट्रैक भी है। तो चलो देखते हैं आज कैसा होने वाला है। ऑफ रोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। तू टाइम लैप्स निकल, मैं निकलता हूँ ये अपनी ब्लॉग। तो आज हम लोग काथलदर वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। तो अभी जस्ट हमारा ट्रैक चालू हुआ है और पूरा जंगल है, फिर उसके आगे है वाटरफॉल। पूरा मतलब काथलदर वाटरफॉल के लिए जाने के लिए पूरा डाउन साइड रास्ता है ऐसे। हाँ राइट राइट राइट, चलो राइट। आई एम फॉलोइंग यू ऑल। तो आज हम लोग के साथ है मनोज सोनावने। ये इसको तुम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में, बाकी सबको तुम लोग जानते हो। और एक और न्यू मानुस है हमारे साथ वो है हर्षल मराठे। हर्षल मराठे रुक इधर आ, प्लीज कम हियर। हर्षल मराठे आई एम हियर। ये नया आदमी है हमारे ये नया आदमी है मेरे ब्लॉग में। बाकी सबको तुम जानते हैं, ये सब गोवा के ब्लॉग में देखे रहेंगे। को एक्टर मनोज सोनावने। ये चलो चलो। इधर कातलदार वाटरफॉल के लिए जाने के लिए ऐसे रिबन्स बांधे हैं, रेड कलर ऑरेंज कलर के। ये प्रॉपर रास्ता है। ये व्लॉगर्स लाइफ है अपनी, अपने पीछे से शूट करते रहना पड़ता है।
बहुत डार्क जंगल पैचेस है इधर, अंदर बन जैसे टोटल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बहुत अंदर है अभी। अंदर टोटल जाने के लिए देखते कितना टाइम लगता है, मैं लास्ट में बताता हूँ कितना टाइम लगता है। ऐसे नोट्स बांधे हैं, जो भी आएगा ना तुम लोग को समझ आएगा रास्ता प्रॉपरली कैसे जाना है। एक मिनट, और ये देखो हमारा बंदर, मनोज बंदर। एक मिनट। हाँ भाई 1 मिनट, यहाँ से जाना है आगे। तुम लोग को ये स्पॉट दिखेगा तो समझेगा कि आगे का ऐसे रास्ता है, यहाँ से रास्ता है इसका। ये देखो ऐसे रिबन बांधे हर जगह रास्ते में, तो समझेगा प्रॉपर कैसे जाना है। और ये समझ में आता है पैसेज है करके जाने के लिए रास्ता है। हम लोग रास्ता घूम गए थे बीच में, फिर बाद में हम लोग को एक और ग्रुप मिला, वो और हम लोग साथ में अभी एक रास्ता स्पॉट कर रहे काथलधार कैसे जाना है। फिर बीच में हम लोग को आगे चलते चलते रास्ता मिल गया, बिकॉज सब जगह रिबन्स लगे और ऐसे एरोज लगे, और साथ में हमारा एक और ग्रुप ऐड हो गया अभी, तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। आधे टाइम पास भरे हमारे ग्रुप में। और ये देखो एरो पकड़ के जाओ, नहीं तो घूम जाएंगे भाई लोग। आया स्पॉट आया भाई। आने क्या स्पॉट है यार। Look at this beautiful waterfall, Kataldhar waterfall. तो फाइनली अब हम इधर आ गए कातलधर वाटरफॉल तक। बहुत ट्रिकी रास्ता है, तो कभी भी आएगा तो इधर के रिबन्स फॉलो करो। रेड कलर के रिबन से ज़्यादा मैंने ब्लॉग में भी दिखाया है, और अभी आगे देखो।
जस्ट हमारा ट्रैक हुआ अभी और हम लोग ने खाना खाया, यहाँ लोनावला में आके खाना खाया। अभी हम जा रहे हैं वापस पिंपरी। तो जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। चलो बाय।